बताइए, एक और तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी 71 में जो आप बताएंगे। हमारे बचपन में मैगजीन्स होती थी। तो हमारे घर में धर्म योग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इलस्ट्रेटेड वीकली, समटाइम्स फिल्म फेयर, चंदा मामा एंड ऑल दैट दैट्स स्टफ, राइट। यू रिमेम्बर। तो धर्म योग आस्क्ड ए रिपोर्टर नेम राजीव कुलकर्णी to go interview पंडित भीमसेन जोशी, अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक हाँ सिंगर। हाँ हाँ। तो राजीव जी गए भीमसेन जोशी जी के घर। तो घर में गए तो अंदर आने दिया, तो ही एज सुन एज ही एंटर्ड ही हर्ड a song being played. So and it did not sound like Bhimsen Joshi. हम्म, Anyway, he was asked to go in, and Joshi was sitting somewhere, वो चौकड़ी मार के बैठा हुआ था, आंखें बंद, हम्म। पीछे रेडियो पे गाना चल रहा है। एंड आंखें बंद, वो अपने जैसे हम लोग कभी मजे में सुनते हैं ना, अपने लीन हो हाथ, गए, लीन हो गए। he's like lip syncing and हाथ लगा लगा कैसे। एंड द गाना was कुछ तो लोग कहेंगे। And then after that, he thought he could talk Namaste ji, and then the next song came on, Changari Chingari Koi Bhadke, and Bhimsen Joshi said, "Chup ho ja ke, I want to listen to this song." हाँ, So he had to sit down and बैठ के चुप से, and he very incredible situation कि ये वो वीडियो नहीं ले सका, obviously हाँ, उस जमाने हाँ, में वीडियो नहीं था, हाँ। कि here's Bhimsen Joshi listening to Amar Prem songs. आर डी So बर्मन। yeah, so Bhimsen Joshi continued by explaining how well these were composed, and how the fact that Kishore Kumar did not have classical training helped make these sounds better, because he could take liberties. See, if you belong to a gharana, हाँ there are जी। certain things you have to do. In सरगम इस तरह से गाई जाती है कि माँ के बाद पा नहीं गाते, इन्हें वगैरह वगैरह. He didn't know any of this nonsense. सो वो जहां भी उसको ठीक लगा, RD बर्मन ने कह दिया यहाँ रुक जाओ, वो कर जाओ, बीच में ऊंचा कर दिया, नीचे कर दिया, एंड क्रिएटेड मैजिक सिंस ही वाज अ जीनियस himself, Kishore, ऑफ along कोर्स। with this thing. And then he says कि ये गाने अब फिर सुने नहीं जाएंगे, ऐसे गाने अब फिर सुने नहीं जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई ही भीमसेन जोशी वांटेड। ने कहा। भीमसेन जोशी ने कहा। सो वाह। वाह। एनीवे, तो सुने। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे राग यमन में है। कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग
इन रंग रलियों में हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा, इन गलियों में ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। So, Amazing. so this is one of the most covered songs. कुछ तो लोग कहेंगे, not only because of the music and the singing and the words. So let's talk a little bit about the words. First of all, Anand Bakshi wrote them. Bakshi went to hell later on in his career, but these were beautiful, beautiful words. तो इसकी concept की बात करते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे कि ये this is a very big issue कि लोग की कहेंगे. की कहेंगे, दसो. And all the way going back to Plato, 2000 पहले, after Socrates, Plato writes about motivations of people's actions. Why do people do things what they do? And और है कि survival है, ये है, desires हैं, जो भी needs हैं वगैरह. One of the main motivation is societal approval of fellow human beings. And that makes you do certain things. You can be very brave, लोग पीछे, because you need to jump करना है, आग में तो लड़ाई करनी है, जो भी. Anyway, so that is a big issue. And the thing is though, if you go on social media, Facebook वगैरह कहीं पे जाते हो, it's not psychobabble. Every third person tells you, if you stop worrying about people, your life would be much better. मुश्किल ये है कि अब तू कपड़े उतार के नंगा बाजार में घूमने चला जाए कि तुझको फिक्र नहीं है लोगों की, तो आपको मुश्किल कैसे हो पता जाता लगा? unless you're an ex-president, you हाँ. can't get away with this shit, I mean, कुछ तो लोग कहेंगे, उसकी परवाह करनी पड़ती है. I mean, the only people, so you know this movie called What Will People Say? No, What Will People Say is the name of the movie. अच्छा, अच्छा. It's a Norwegian movie, अच्छा. entry for best foreign film 2019 for the Oscars. अच्छा. It's made by Pakistani woman named Iram Haq. She shot it. It's about a Pakistani family, conservative Pakistani family in Norway. Okay. And Okay. there's a teenager girl, and she sneaks a white boy into her room, and they're kissing, and the father comes and discovers them, and he assumes the worst. तमाशा शुरू हो जाता है. So anyway, and there are scenes in supposedly in Pakistan. They were shot in Rajasthan. It's difficult to find, but get it. What will people say? Simple movie, little movie. It will resonate with most people and so forth. So it's a whole movie about that. And the thing is that, in my thinking, that either you have to be extremely powerful or extremely rich, or have nothing and want nothing, and you can stop caring about people. We are social animals. कुछ बचना तो, we have no choice but to be social. But there's a limit to what we can do as if you social remember, तुमको बचपन में सिखाया होगा, चाह गई चिंता मिटी. You know that one? चाह गई चिंता. Let me see. Remember, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह. तो अरे वाह, तो ये तो हिंदू फिलॉसफी. Yeah. Are you familiar with Jack Nicholson crazy hair meme generator? अभी दिखा दें आपको उसका क्या मतलब है? हाँ, दिखाओ. I mean, people can actually go look for Jack Nicholson crazy hair generator and make your own generators. Yeah, देखो ना. This is the meme generator you were talking about.
And So what's interesting about all of this is that आपने जैसे शुरू किया आनंद बख्शी के बारे में, Anand Bakshi obviously is reviled for his very ordinary lyrics, but he created some really interesting. He was a person who could produce song after song. For 20-25 साल तक उसने बताया that कई 100 songs बनाए हैं. And what's interesting is that at that time, not much credit was given to people who wrote scripts, lyrics. And I think that probably came because उसके songs इतने ordinary होते थे. That's my theory. तो दूसरा सॉन्ग था चिंगारी कोई भड़के, उसमें the poets amongst us will appreciate, and this is a whole theme, चिंगारी कोई भड़के सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए. And there are continuations on, there is an old song, many songs like that, many poetry like that. Kishore Kumar's first song, the first song he ever recorded was for the film Ziddi, Devanand. And मरने की दुआएं क्यों मांगू. You know what I'm talking about? No. नहीं. मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे. उसमें है जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे. So on and on. So and then you can take it further. Robert Frost, I'm sure everybody's familiar with Fire and Ice, that one? बताइए. Oh, okay. Frost. Some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice.